evoking memories of the march from Punjab and Haryana to the nation's capital on November 26, 2020. हालात यहाँ पर कहीं ना कहीं बेकाबू होते जा रहे हैं और सिचुएशन तनाव वाली बनी हुई है। लोगों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि लोग भी आगे ना बढ़ें। और ये देखिए, ये जो ड्रोन आया है इससे टीयर गैस सेल फेंके जा रहे हैं। Behind me is what you witness is almost like a war zone because there's a consistent. Oh my God! This is where a tear gas has gone on, and obviously this is almost suffocating because of the nature. And remember, this is where media is stationed, and continuously you see the farmers on one end, and this is where the farmers on one end and the Central Armed Police as well as Haryana Police on the other end. So continuously there is a back and forth stone pelting. This time around, the protests carry a different tone from the prolonged agitation of the past. In contrast to the 2020 protests against new agricultural laws, which were eventually repealed a year later. The February 2024 protests focus on long-standing grievances confronting the country's agricultural sector. देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से। एजीटी कितनी देर चलेगा यहाँ पे? देखिए जब तक सरकार मांग नहीं मानती। Key among the farmers' demands is the enactment of a new law ensuring a minimum support price for their crops. Despite some progress on other fronts, the impasse over the legally backed minimum support price fueled Monday's demonstrations. While the government sets minimum prices for over 20 crops annually, the Food Corporation of India primarily purchases rice and wheat at these rates, benefiting only about 6% of farmers. The government maintains that time is needed to devise a solution. मैं मानता हूं कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात को यदि हम समझेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका समाधान को अच्छे ढंग से निकाल पाएंगे। Traffic routes and border restrictions around Delhi led to extensive gridlock in the city. Currently, it is Shambhu border, located approximately 230 kilometers north of Delhi, that has become the focal point of clashes between enraged farmers and authorities striving to prevent their advance towards the city. With Kamaljeet Sandhu and Satyendra Chauhan, Bureau Report, India Today. Big news coming in. Another jolt for the Congress likely in Maharashtra. Ex-Chief Minister Ashok Chavan set to quit the Congress after Baba Siddiqui Milind Deora, a third big jolt. There's a likelihood that Ashok Chavan could quit the Congress. This is news and speculation that's coming in as sources tell us that after Baba Siddiqui and Milind Deora, it's very likely that Ashok Chavan, ex-Chief Minister, a big phase from the Congress party in Maharashtra, is likely to quit the Congress. Now, Ritik Balekar, our correspondent, to give us more on that. Ritik, Ashok Chavan, who is known as a Congress loyalist, a likelihood that he may quit the Congress today. Is he joining any other party? What's the reason for this speculation to arise? So there is a strong speculation about the Congress leader, ex-CM Ashok Chavan, who is likely to give resignation of his membership of Legislative Assembly, and he has met Maharashtra Assembly Speaker Rahul in the morning. He had a brief discussion with him for nearly half an hour. Then he left Vidhan Bhavan, and what is being told by the sources of Vidhan Bhavan is that Ashok Chavan will be back in an hour or so with all the formalities done, and he is very much strongly speculated that he is likely to resign from his post of MLA because there are Rajya Sabha elections which are happening on 27th of February, and the nominations which are being filed all across the nation. Yet BJP, three seats
have not been declared, and there are speculations that Ashok Chavan is likely to join hands with BJP. He'll be entering BJP party very soon, and he'll be the likely candidate from BJP for the upcoming Rajasthan seat from Maharashtra. Well, that's a big speculation that's now come to fore. Was there any strain in relations between Ashok Chavan and the senior leadership of the Congress? We know for a fact that he's got his due as a leader. He was the Chief Minister of Maharashtra. He's been a senior Congress leader. In that sense, perception-wise, he was known to be a heavyweight in the Congress. So what's really the reason here, you believe? So we can see how NBA, Mahavikas Aghadi, the opposition alliance is functioning, and how there are problems over the seat distribution for the upcoming Lok Sabha elections. On the other hand, on the national front, India bloc, there are also big players who are leaving India bloc, and in Maharashtra also, one after another, Congress leaders are giving the resignations from the party post, be it Milind Devra, then be it Bandra's ex-MLA, and now Ashok Chavan. So there are one after the another. It has been speculated that there are many faces, many big faces in Congress who are willing to join hands with BJP. But now we can see that as Rajya Sabha elections are around the corner, the political happenings are in swing, and very soon Ashok Chavan is also likely to resign. Wow. Has there been a word from him? Has he spoken? Has anybody from the party spoken? This is really big news. Baba Siddiqui first, or Milind Devra first. Baba Siddiqui, the third big jolt for the Congress in Maharashtra, is Ashok Chavan is likely to quit the Congress. There's still no confirmation. I'd like to clear that. There's no confirmation yet, but Ritik Balekar, who's following that story very closely, says it's likely to happen anytime now. Anyone who's spoken around this, be it the BJP or the Congress, Ritik? There's no official word from Ashok Chavan or his office because most of his close associates and also enemies close to him are not reachable since morning. Even Ashok Chavan is not reachable. No one from his office is confirming it officially. But now what we can see is there are Devendra Fadnavis, who is the deputy CM, and Mumbai President of BJP, Ashish Shelar, is addressing a press conference in party headquarters in Mumbai. Soon he'll be speaking about it and clearing the air over the resignation of Ashok Chavan. So we are looking forward to the press conference of Devendra Fadnavis. Thanks very much. What I want to do first on the show is go across live to my colleague Manjeet Saigal. He's joining us from the Sangrur border. This is the border between Punjab and Haryana, which is where a lot of the violence took place through the day. Manjeet, you've been speaking to the farmers. What's the situation on the ground now? What are the police telling you, and what do you think is most likely to happen tomorrow? Well, Rahul, the situation here on ground is really tense as farmers continue to reach the Shambhu border. Farmers even tried to break the barricading put up by the Haryana police. Haryana police had warned the farmers not to reach and violate the section 144. Remember, this section has been imposed in 15 districts out of a total 22 districts in Haryana. But when the farmers did not spot and indulge into stone pelting, the police started firing the tear gas shells with the help of drones. So police is keeping an eye on the protesters and taking no chances, and seems to have learned a lesson from the farmer agitation which we witnessed in 2020 and 2021. As far as the farmers are concerned, Rahul, they say their destination is not Haryana. They want to reach New Delhi to press for their demands. They had, in fact, raised at least a dozen demands, out of which there was no consensus on three major demands, like making a law on the MSP and bringing all the crops under the MSP regime, besides a loan waiver. These demands have not been met, and the farmers say they will continue their Delhi Chalo march till their demands are met. Rahul. Manjeet Saigal, thank you very much. Earlier during the day, one of my colleagues, Satinder Chauhan, was in fact injured while he was reporting from the Shambhu border. I want to go across to the hospital in Chandigarh, where Satinder is currently recuperating. There's a lot of concern on social media and elsewhere about his condition, so I think it's best that viewers hear directly from Satinder. Satinder, welcome. How are you doing now? कैसी तबीयत है आपकी? कैसे हाल हैं आपके? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? क्या बता रहे हैं डॉक्टर आपको, सतिंदर? देखिए, उस समय
सुबह से ही हालात तनाव के बने हुए थे और दोपहर होते होते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव हो गया था और टकराव इस कदर बढ़ गया था कि किसानों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए थे और उसके जवाब में पुलिस ने लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए थे। और एक समय ऐसा भी आया जब पुलिसकर्मी कूदकर बैरिकेड्स छोड़कर किसानों की तरफ नीचे सामने आ गए थे और वहां पर ऐसा लग रहा था कि पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं गिर गए हैं क्योंकि पथराव हो रहा था। और वहां से लगातार उन पुलिसकर्मियों को निकालने के लिए जब 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 वहां पर पथराव बढ़ गया तो फायरिंग की आवाजें आने लगी और हम क्योंकि वहां पर लगातार कवरेज कर रहे थे तो अचानक जो है मेरे साथ आसपास के भी लोग थे वो भी घायल होकर वहां पर गिर पड़े और मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि चोट लगी है और मेरे चेहरे से खून बहने लगा और शायद मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं लाइव कर रहा था, आसपास से इस तरह के आवाजें आ रही थी कि जैसे गोली चली हो और लाइव पे मैंने बोला कि शायद मुझे गोली लग गई है। हालांकि वहां पर जो लोग थे तुरंत मेरे को ले गए हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में ले जाके मुआयना कराया और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो छर रहे थे। Okay, Satinder Chauhan, thank you very much for joining us. As I said, we've got different kinds of voices joining us on this broadcast. I want to welcome Ramandeep Singh. He's one of the protesting farmers joining us from the ground. We've got Mohini Mohan Mishra, Secretary of the Bharatiya Kisan Sangh. Supriya Shrinath represents the Congress party. I want to tell our viewers that the BJP has decided not to send a spokesperson for this broadcast. They basically said that we're in talks with the farmers and because the matter is sensitive and we're trying to resolve it, they're not sending somebody. We have Shivraj Singh, President of the Bharatiya Kisan Union, Lok Shakti, and he's with us in the studio. And Harish Damodran is one of our top rural affairs experts, rights on agriculture. And I want to go across to Harish Damodran to try and get a sense of, you know, really how the facts stack. Given the current situation, where do the facts stack? So we'll talk to Harish Damodran about that. Rajat Sethi will join us as well, who's a public policy expert. So first and foremost, I want to go across to Ramandeep Man. Ramandeep जी, आप बॉर्डर पे हैं अभी, आज स्थिति काफ़ी नाजुक थी, इसके बाद अब क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, किसानों के एक नुमाइंदे के तौर पे आपकी तमाम बाकी किसानों से बातचीत हो रही है, आपको कुल मिला के क्या जानकारी मिल रही है कि यहाँ से आज जो हुआ उसके बाद किसान क्या बॉर्डर पे ही डटे रहेंगे या बातचीत से आपको लग रहा है सरकार के साथ जो हो रही है उसमें कोई समाधान निकल सकता है? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ जी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो, हमारी हाथ जोड़ के आदरणीय जो मोदी जी से ये विनती है कि हम तो ये मांग लेके आ रहे हैं कि जो एमएसपी व्हाट इज अनाउंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, व्हाट इज प्रोपेगेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि इट इज मिनिमम प्राइस जो फार्मर के पास आनी चाहिए, हम तो वो बोल रहे हैं कि वो दे दो, उसका लॉ बना दो। सीधी बात है। अब इसमें एक और कमेटी बनाना, वो देखो जब लास्ट फार्मर प्रोटेस्ट हमने स्थगित किए थे तो उसमें वी वर अश्योर्ड कि एक एमएसपी कमेटी बनेगी और हर एक फार्मर को एमएसपी मिलेगी, लेकिन सैडली उसमें तो जो यहाँ पे फार्मर बैठे थे 13 महीने के लिए बैठे थे, उसमें एक भी आदमी उनका नहीं था। जो वहाँ पे फार्मर बैठे थे एक भी फार्मर यूनियन का या फार्मर लीडर उसमें वो नहीं था। और अब 2 साल और 2 महीने वेट कर लिया। पर सर आप तो एक तरीके से इलेक्शन से पहले आ गए हो ना रमनदीप जी, आप एक इलेक्शन अभी अनाउंस होने वाले हैं कुछ हफ्ते में, इलेक्शन से ठीक पहले आ गए हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज पॉलिटिक्स थ्रू द फार्मर्स, कि आप लोग राजनीति कर रहे हो, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हो। आपकी बातचीत होनी भी चाहिए, सरकार बातचीत भी करे, लेकिन इस तरीके से प्रेशर बनाना क्या एक तरीके से ये पॉलिटिकल एजिटेशन है आपका? नहीं, कोई सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही। कल पीयूष गोयल भी थे, मैं भी उस मीटिंग में था, तो हमने यही हाथ जोड़ के विनती की, भाई आप अनाउंस करते हो और आप उसको लीगल सैंक्टिटी दे दो। और पीयूष गोयल जी कहते नहीं, आई हैव टू स्पीक टू समबडी, ही वेंट आउटसाइड, ही स्पोक टू समबडी। अब पता नहीं कौन समबडी है वो। फिर ही केम इनसाइड एंड देन ही सेड कि नहीं इसमें बहुत इम्पैक्ट है, ये है वो। तो हम देखो बात सीधी है, सीएसीपी जो सीएसीपी जो हमारा एमएसपी करती है वो एमएसपी अनाउंस करती है।
वही एमएसपी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर देती है। हमारी हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी विनती है कि सीएसीपी आपकी, लागत आपकी। देखो हम अगर अपनी बात पे आए तो लागत तो हमारी बहुत ज्यादा है, तो वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून, वी आर जस्ट सेइंग कि भाई जो आप अनाउंस करते हो वो दे दो, और वो हमको मिलता नहीं तो उसका लॉ बना दो, बस इतनी बात है। अब इसमें क्या कमेटी बनेगी, इतना सिंपल है नहीं ना। एक कैलकुलेशन की गई है इकोनॉमिस्ट द्वारा जो कि कह रही कि करीब 11 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा अगर ये 23 जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं अगर सब पे हमें एमएसपी लगानी पड़े, तो जो सारे का सारा पैसा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक गुड्स पे खर्च होता है, जिससे कि सड़कें बनती हैं, एयरपोर्ट बनती हैं, वो तो सारी फिर हमारी इकोनॉमी की साइज करीब 45 लाख करोड़ है। तो ऐसे में 11 लाख करोड़ एमएसपी पे कैसे खर्च हो सकते हैं सर? देखो इसमें देखो जो गलत बात नहीं करनी। अभी आपने हरीश दामोदरन जी को बैठाया, बड़ा इज्जत है, मैं उनके आर्टिकल पढ़ के मैंने सीखा उनसे बहुत कुछ। आप हरीश दामोदरन जी से पूछ लो, एक बार बेंचमार्क बना दोगे तो जो मंडी है वो उसी हिसाब से चलती है। अब आपने इनका आर्टिकल पढ़ लो, एक आर्टिकल 5 लाख करोड़ का है। देखो मैं आपको सीधी बात बताऊं, किसानों वाली बात भाई, देखो एक बात हमारी ये भी हुई थी कि सारी की सारी ही जो हमारी फसल है